निकाल देता हूँ। Study with me or not required. Bottom. Positivity. ठीक है. Last minute prep नहीं भाई, सो जा. So sweet of you. This is so motivating. Yeah, thank you. Please don't forget that this is not easy to stay up about. And I don't think anyone has done this. Anyway, मुझे अभी लिटरली ये थॉट्स आ रहे हैं कि एग्जाम के बाद बर्गर खाने जाएंगे. हाँ भाई, मिली यही थॉट्स होने चाहिए. लिटरली आई एम से दिस शुड बी योर थॉट्स. से ऊपर आ रहे हैं. अरे अभी कुछ now don't think about marks, just chill. मार कुछ नहीं, सोना है अभी, बस मैं भी सो रहा हूँ. Millie, why are you staying up? But what will you do staying up? Don't revise. Sleep. Nothing doing. I mean, no staying up. Not required. Remove your glasses. क्यों? निकाल देता हूँ. What purpose? चल, let's end stream. See you at 4:30. Hi guys, all the best. If we don't meet again, all the best wishes with you. You're gonna do very, very well. And De Jong. Fina onto his left foot as well to shift the ball out wide for Gerard Martin, who tried to play it back to the Brazilian, but it's well defended, and now Valladolid look to break on the counter. Latazza's gone down following a challenge off the ball with Araujo. Ahmad NDI ran out of room, ran out of teammates to try and pick out. There's now a card is coming, and it's a yellow card for Ronald Araujo. Just to confirm, we thought Araujo had been booked in the first half. The yellow card was actually for Valladolid's Amadou Silla. So this is Araujo's first yellow card in the game. It's not a second, which obviously would mean him being sent off. But it does mean that both of Barcelona's centre-halves are on a yellow card for these final minutes. As Lamine Yamal incredibly comes back and just shows to Hansi Flick that he can play right back.
Chance now, potentially for Barcelona on the counter-attack. Rafinha looks for Dani Olmo. His first touch may just have let him down, but he brings the ball under control. Now Fermin. And Barcelona end up slowing it down, which give Real Valladolid the chance to regroup and set up once again their low block, which has inched forward a bit in the last few minutes as they are looking to try and get something out of the game, as Valladolid are about to make their final change. Yes, it's Mario Martin coming on for Candela. So see there, Mario Martin set to come on. Essentially in midfield, it's Juric who has made way in midfield. Like for like swap. The middle of the park. Anthony goes down. Now it does seem, Andreu, it's that part of the game where Barcelona have to defend with the ball, something that was constantly repeated probably when you were being coached by Pep Guardiola at Barcelona as well. The art of defending with possession. Defend with the ball, exactly. That's, for me, the best way. If you have the ball, nothing can happen to you. But it's also difficult. And I think you have to manage the game right now, because you've worked so hard to come back in this game. You did the job, and now there's not much left, but you need to secure this result, because going from this to a tie will be terrible news for Barcelona, I think, right now. So you need to be very smart. You need to try to keep the ball, waste your time when you can, and then make the game be the more calm possible. Played now to Eric Garcia. Lovely skill there from Lamine Yamal. He makes it look so simple. Here he is again, but eventually loses out to Mario Martin. But the foul is given now on Fermin. And it's going to be a dangerous free kick position for Barcelona. It just makes it look so easy, Andreu. And say manage the game or give the ball to Lamine Yamal and just watch and see what happens. It makes it look so easy, as you said. It's so fun to watch. It's obviously unfair because he's only 17, but people will obviously try and make the comparisons. You were very fortunate to have trained, not just played, but trained with Leo Messi. You can understand people are making those comparisons. It's understandable. I was the first one saying, no, don't do that. It might not be good for him, but he's being too good to not do it. Just too good. Another example, last game against Inter de Milan, what he did, it's not normal for a kid that is only 17 years old. So I understand people wanting to do those comparisons. Rafinha and Dani Olmo, the two players over the free kick. It's a long way out for Barcelona. It's going to be Dani Olmo, and it's on target. But eventually, a formality of a save, really, for Andre Ferreira, who's not been Valladolid's regular #1 goalkeeper this season. Karl Hein has, and yet he's been kept very busy today. Andre Ferreira keeping this at just 2-1. He wasn't as busy, though, as Mallorca's Leo Roman. Barcelona in their last game attempted 40 shots against Mallorca in a game that only ended 1-0, which is the most attempted shots in a game in a single La Liga match in history. Real Madrid managed to do it as well against Zaragoza quite a few years ago, but still 40 shots today. It's over 20 for Hansi Flick's side. Just 2 goals to show for it for them, and there are just 2 minutes left of regular time in this game. Certainly a completely different scenario from the first leg with that 7-0 in Montjuic. The reverse fixture, Barcelona's biggest win of the season, 7-0, was also Valladolid's joint biggest defeat ever in the top flight in the club's history. Actually, a third time Real Valladolid lost 7-0, fallen in the past to Atletico de Madrid and Real Madrid by the same scoreline
as we just see another replay of the free kick. Dani Olmo trying his luck from long range. We were pointing out earlier for Football Club Barcelona that 86 goals of Barcelona's 160 now this season in all competitions have been scored by the front three. Ferran and Dani Olmo have scored 29 of those as well, which seems almost surreal when you think about the fact that both of them haven't really been regular starters for Barcelona this term. And that also shows the squad management of Hansi Flick. Another one of those involved is Eric Garcia, who's just picked out Rafinha now. Ball back to Dani Olmo, who just went to ground outside the penalty area. Gets the free kick, and it's going to be another yellow card shown. This one for Mario Martin. But to what we were saying, Andreu, the squad hasn't necessarily changed a lot compared to what Xavi Hernandez had last season. And yet, a lot has been made about how well Hansi Flick has managed his players this season. I think Hansi Flick has done an amazing job, a fantastic job. The way this team plays, but not just plays, fights for every single ball, fights for every single result, comes back from any situation. The way they go about the business, I think it's just fantastic. It's great to watch. You've said so many stats today during the broadcast, and then all of them talk very well about what Hansi Flick has brought in the table, and it's just fun to watch this team. There's games that are obviously more brilliant than others, but they always go and go to do the business. The free kick. 5 minutes of added time. Just outside the box. Rafinha lets fly, and it hits the roof of the net, but it goes over the crossbar. Very, very close. It was being looked at as to whether it was just inside the penalty area. As Rafinha pointed out, going to have 5 minutes left to play. "91 goals this season scored in La Liga by Football Club Barcelona. To put that into context, the second team who scored the most are Real Madrid, who've scored 25 goals fewer than Hansi Flick's side. And Atletico de Madrid have scored 35 fewer than Hansi Flick's men. So clearly finding the back of the net has not been an issue for Barcelona. They've struggled at times tonight, but they have managed to turn this game around despite a very good first half display from Real Valladolid. And Andreu, at the end of the game, obviously people will focus on the fact that Barca have come from behind and they've won the game, but Valladolid's performance can't go unnoticed as well. They have stepped up today. I think so. As we mentioned before, they were relegated. You could come here and just give up and not care, but then you play against Barcelona, you get for sure punished. Ronald Araujo has to cut across to block the pass into the box. Mario Martin was there, and it wasn't offside. It's actually a foul on the Uruguayan, and all the Barcelona players go over to pat their teammate on the back who's gone down here. We'll see the move yet again. It does look like Gerard Martin is just playing NDI onside. That's a very good action from Ronald Araujo. Oof. There's contact there, but he does really well of protecting the goal and covering the Christensen's back. This is the earlier incident off the ball from Araujo that saw him booked inside the centre circle. For him, luckily, it was only a yellow card. Maybe others might have seen that as a different colour card, but we'll leave that up for discussion. As the ball's now played in behind now for Raul Moro, who's in the box, and Marc-André ter Stegen was on his toes, was off his line, and he was able to get there just ahead of the Valladolid winger, who really has made Hector Fort's night very difficult this evening. But ter Stegen did well to get to that ball. Quick reminder that the next fixtures for these two sides are popping up at the top of your screens. Real Valladolid will travel away to Mallorca, and Barcelona, after playing away to Inter Milan, will be playing at home next Sunday
in a game known as El Clásico against Real Madrid. First versus second, that will probably be a game that could be a title decider. In fact, depending on what Real Madrid do tomorrow at home against Celta, Barcelona could win the title in that game. But the game here is not over just yet, as Raul Moro's been picked out once again. He wants to let fly, in fact, opts to chip the ball over the top. Frenkie de Jong is able to come and save the day as Fermin is just clipped, but he keeps on running. Rafinha plays the ball across. Lamine Yamal is in space here. He tiptoes into the box now. Lamine Yamal on his left foot, and it's blocked by the defender. A goal that surely would have put the game to bed, as we are into the final seconds of this stoppage time. Fermin has gone down and he stayed down, as Rafinha does win this free kick now. It's going to be a foul, but we saw the challenge. And funnily enough, from Fermin, he kept on running. He didn't go to ground. Yeah, he wanted to finish the play with a goal, but now he's obviously in pain because he got hit really hard. Well, this free kick is almost as far away as the one Dani Olmo hit a few minutes ago. Both he and Rafinha are over the ball. The 5 minutes of stoppage time are up, so we do think this will be the last chance of the game. Dani Olmo has moved away, so it's going to be Rafinha. It's a very long way out. He does go for goal, and it's just wide of the front post, as the referee now blows his whistle for the end of the game. Valladolid were in front at half-time, but at conclusion here, after the 90 minutes, Barcelona have turned the game around and won it by 2-1. Ivan Sanchez's goal in the first half for Valladolid cancelled out by goal. Chat, hear this out. Hear this out, chat. Hear this out. Hear this out. अगर 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 रियल मैड्रिड कल का मैच 1% हार जाए, अगर रियल मैड्रिड कल का मैच 1% हार जाए, फाइनली people realize why Fick chose Martin over Fort. Absolutely, भाई, he was very good in today's match. भाई, he was very good in today's match. But ये सुनो दोस्तों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन केस 1%, जो कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, रियल मैड्रिड नहीं हारने वाली सेल्टा विगो से, लेकिन अगर 1% रियल मैड्रिड सेल्टा विगो से हारती है कल, तो एल क्लासिको अगर बार्सिलोना जीत गई तो वो लोग लीग जीत जाएंगे 11 मई को. इसका मतलब 11 मई के बाद बार्सिलोना दबा के रेस्ट दे सकती है, दबा के रेस्ट. जेरार्ड मार्टिन MVP भाई, एब्सोल्युटली डिजर्व्ड भाई, एब्सोल्युटली डिजर्व्ड भाई, एब्सोल्युटली डिजर्व्ड. ही प्लेड वेरी गुड, ही प्लेड वेरी गुड भाई, ही प्लेड वेरी गुड. ये क्या है भाई, तेरी माँ की साले, फंसाने वाला था तू मुझे, है भाई. ग्राफिकली स्मार्ट, तू पिटेगा मुझसे, मार खाएगा.
कुंडे पे अपडेट भाई। इंटर के अगेंस्ट बट हम लोगों को खिलाना पड़ेगा बाल्डे। इंटर के अगेंस्ट तो हमें बाल्डे ही खिलाना पड़ेगा भाई। इंटर के अगेंस्ट हम लोग नहीं खिला सकते हेक्टर फोर्ट ओ या जेरड मार्टिन। इंटर के अगेंस्ट वी नीड बाल्डे भाई, क्योंकि दैट्स अ वेरी फिजिकल गेम, दैट्स अ वेरी फिजिकल गेम। जेरड मार्टिन आज बहुत अच्छा खेला, बट इज अ वेरी फिजिकल गेम। लीग दे दे प्लीज। भाई अभी अभी हमारा वो कंफर्म्ड नहीं है ना भाई। नेक्स्ट गेम चैट, ओ माय गॉड भाई चैट, नेक्स्ट मैच भाई बहुत इंपॉर्टेंट है चैट, मेरी फट रही है चैट। आई हैव फेथ इन द बॉयज भाई। लुक एट द नेक्स्ट, लुक एट जो मैचेस बचे हैं। एक वी प्ले इंटर, वी प्ले बारसा, वी प्ले मैड्रिड, वी प्ले इंटर, वी प्ले मैड्रिड। भाई साहब भाई ये दो मैचेस ब्रो, दीज आर इनसेन फिक्चर्स, दीज आर इनसेन फिक्चर्स भाई। भाई आई फियर इंटर भाई, बिल्कुल आई भाई इट्स नॉट गोना बी इजी, बिल्कुल इट्स नॉट गोना बी इजी, एब्सोल्युटली नो डाउट। काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं जो दिक्कत देगी, बट आई एम होपफुल, आई एम पॉजिटिव, आई हैव होप। ये पढ़ते हैं भाई। दिस विल बी द 18th मेजर यूरोपियन मीटिंग बिटवीन इंटरनेशनल एंड बार्सिलोना, द ओनली with only Bayern Munich versus Real Madrid 28, Juventus versus Real Madrid 21, and Inter versus Real Madrid 19 have been more often in history. Each of the last two games between these two teams have ended 3-all. 3-all in UEFA Champions League in October 22 and this season's first leg. रफीनिया अगर ड्रिबलिंग बेटर कर लेता तो खेल ही खत्म। बट we play Inter, we play Madrid. Barcelona can win the league. Barcelona can win the league on 11 May. और कमरे में बहुत ज़्यादा हो गया है। ओ सीजन रियल मैड्रिड एंड लिवरपूल। माहौल पूरा वेवी, वेवी तू फिट पाए वेवी तू। भाई तुम लोग लेवा की जरूरत नहीं दिखती क्या? वैसे बिल्कुल दिखती है भाई, एकदम आंखें खोल खोल के दिखती है। किसने बोला नहीं है? लेवा को तो मैं तब से याद कर रहा हूँ जब से मेरा भाई गया है, उसी मिनट से, उसी सेकंड से। In 2022-23 season, Mats has no competition. Still, he was the best goalkeeper. भाई कोई हेल्प कर। अबे तू चुप। पर भाई दोस्तों, नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट दो गेम है आर मेक और ब्रेक। अब से हर मैच एक फाइनल है चैट, डू यू अंडरस्टैंड? अब से हर मैच एक फाइनल है, हर मैच एक फाइनल है भाई। हर मैच एक फाइनल है भाई, अब से हर एक मैच एक फाइनल है। ड्राफ्ट, आई डोंट नो, आई विल एक्चुअली गो एंड स्लीप। हाई चांसेस आई कैन गेट टू, हाई चांसेस मैं कल सुबह जाकर फुटबॉल खेलूंगा, तो आई विल गो स्लीप। ठीक है दोस्तों, इट्स नॉट लुकिंग गुड ब्रफ, इट्स फाइन दोस्त, इट्स फाइन, इट्स लुकिंग गुड। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेनी दोस्तों, लाइफ में कभी टेंशन
मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग नहीं आओगे तो मैं बोर हो जाया करूँगा। हम लोग एक फीफा स्ट्रीम ही करेंगे प्रॉपर, जिसमें हम दबा के ड्राफ्ट करेंगे, दबा के गेमें खेलेंगे आने वाले 2 दिनों के अंदर, कल या परसों, मोस्ट प्रोबेबली कल। तो मेंबर्स के लिए भी हो जाएगा। एंड ये स्ट्रीम भी मोस्ट प्रोबेबली अब ख़त्म
launches its missiles, all countries around the world have to activate their anti-aircraft radar systems. This is because even India itself doesn't know where the missiles might end up. They even have to turn on their own anti-aircraft radar systems. Everyone says that it's hard to intercept missiles from the US and Russia, but in my opinion, it's the Indian missiles that are truly impossible to intercept. They can't even be located, let alone intercepted. Apart from missile technology, the Indian Air Force is also formidable. Can you imagine a country that, in peacetime, manages to crash nearly 1,000 aircraft in 40 years? For example, in January last year, an Indian Sukhoi 30 and a Mirage 2000 fighter jet took off from the same airbase for a training exercise. Unfortunately, they collided in midair and crashed about 100 kilometers apart. What's even more bizarre is that the cause of the crash was suspected to be a mid-air collision between the two fighter jets. This accident resulted in the death of the Mirage 2000 pilot, while the two Sukhoi 30 pilots managed to eject and survive. As for the Indian Navy, they claim to have decades of experience operating dual aircraft carriers. But I think there's one more thing to add. They're aircraft carriers. India's other aircraft carrier, the INS Virat, is also quite a spectacle. During sea trials in 2012, 7 out of 8 boilers exploded, resulting in insufficient power to operate, and it had to be towed back to the shipyard. Later, this aircraft carrier frequently experienced fires. Between 2020 and 2022, there were a total of 3 fire incidents. It seems they are not only experienced in operating aircraft carriers, but also quite adept at firefighting on them. Their aircraft carriers may be called aircraft carriers, but they are more like slightly larger cruisers. Once in वहाँ ऑटो स्टैंड पे बोल रहे थे ना इंटरव्यू में फ्री सर्विस है ऑटो की, तो मैंने बोला ठीक है मेरे को छोड़ दो फिर यहाँ चौक तक। तो बोले नहीं नहीं नहीं, पीछे उनसे बोला कि अरे वहाँ ऑटो मिलेगा वहाँ जाओ। मैं वहाँ गया, उनसे बोला बंदा चौक बाईपास, हाँ जहाँ जम्मू का गाड़ी जाता है। कितने पैसे? 200 रुपये। इसके कसम 250 रुपये लेते। मैंने आपको बोला 150। अगर आपके पैसे नहीं तो ले जाओ, ऐसे भी ले जाओ। नहीं नहीं ये बोल रहे आज फ्री सर्विस है। नहीं नहीं वो पहलगाम में टैक्सी का फ्री चल रहा है। टैक्सी का फ्री यहाँ नहीं जाओ बेटा जाओ, अल्लाह के हवाले। ठीक ठीक, नहीं मैं थोड़ा देखता हूँ। नहीं ठीक है मैं देखता हूँ, मैं पैदल चले जाता हूँ। ठीक करेगा, मैनेज करता हूँ। वो बोलते नहीं तू पहलगाम की टैक्सी है खाली वो। Bangladesh until it's ugly. Ooh. Cloudy. Ugly. Explore.
मुझ पे कर दे इतनी सी मेहरबानी, आजा दिल में वो लड़की दीवानी। इतनी सी मेहरबानी, आजा दिल में। मैं हूँ राजा, जहाँ मेरी रानी, मैं हूँ राजा, जहाँ मैं। Friend, I was directing a film and I had an audio function. So I was supposed to invite all big stars. And I said, hey, will we call them? Will they come when I call? He said, tu Hanuman hai yaar. You don't know your power. I immediately said, good. If I know my power, then I'll become a monkey. Hanuman is not supposed to know his power. It is for others to know. If he knows, then he'll become a monkey. He will use the power. Well, my friend, I was directing a film and I had an audio function. So I was supposed to invite all big stars. Oh my God. Oh shit. Oh shit. Go. Come on, y'all. जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकट Go back to your country. Go back to your country, nigger. We don't welcome black people. Black people should go. Go back to Africa. Go back to your country. Go back to your country, nigger. We don't welcome black people. Black people should go. Go back to Africa. You look so fucking ugly with your dark skin color. Go back to your country. Nigger, 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 nigger. Do you eat watermelon? I'm going to send it to my boyfriend because he's white and he's your master. Because he's white and he's your master. Black nigger.
नजारा बहू तेरी नाचेगी खुल के कांचे आज छोलेगी रमजोल अल्लाह अकबर। कश्मीर बहुत खराब है। आप जय हिंद बोल सकते हैं? गाने की कहना की लेना सारी दुनिया भुला के आ अड़िए पानी दा रंग कि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि पत्रकार होने से पहले ऑफ कोर्स मैं भारत देश की हिंदुस्तानी हूँ, जो आप भी हैं। तो मुझे इसमें शर्म नहीं होगी कि मैं इस झंडे को, जो इसका एक ये हमने प्रिंट आउट निकाला है, इसे यहाँ पर रखकर और इस पर खड़ी हो जाऊं। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने अपने हैदराबाद के बच्चे रोला 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 ये वो बोल के फिरते रहते, असली रोला देखते ऐसा घेर लेते लोग। ये है असली रोला, हमारे असद साहब, हमारे असद साहब, हैदराबाद की शान, हमारे असद साहब। किसने बजा रहा? क्या हुआ? हो गया क्या? हो गया क्या? क्या हुआ? 2 बैग ये रह गई। Salam alaikum, India. No buru buru bratucha. I'm from Albania. Albania. Okay. Salam alaikum, India. Dia datang nih, dia sama ini cewek ini gitu kan. Nah, jadi
dia masukin itu dipakai dinyempatkan ini keluar 14 You could share one.
I am a dancer. अभी हम इस कंक्लूजन में पहुंचे भाई। अभी हम इस कंक्लूजन में पहुंचे भाई। बहुत हेटिंग कर ली, ठीक है ना। इसको एक्चुअल में चाहिए व्यूज, इसको व्यूज चाहिए, हमको भी चाहिए, लेकिन इसका बाप आ नहीं रहा, तो हमें भी इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको टट्टों से बात नहीं करनी, तो हमें भी टट्टे से बात नहीं करनी। इसके सारे फैक्ट चूतिया है, नॉनसेंस है। जो ये नई बातें लेके आ रहा है, जो हमने पिछली स्ट्रीम के इसके पॉइंट टैकल किए थे, उनको सही प्रूव नहीं कर रहा, नए पॉइंट लेके आ रहा है अपने। और अब इससे बहन जो ना ये बात करने को तैयार है, इसको बात भी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो बहन तो नहीं करते हैं बात। इसको भाई पूरी कोशिश कर ली है बात करने। सचिन भाई की बात मानते हैं, बड़े देखो भाई, की बात। आप लोगों ने सबने देखा कि ये तो बात ही नहीं करना चाहता। तुम देख लो कि तुम आ चुका है ना भाई, आ चुका है ना, बात ही नहीं करनी। गांड फट गई उसकी, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। फिर लोग बोलते हैं कि भाई क्यों इसको ऐसे छेड़ रहे हो। भाई ये कैसा बंदा है? बात मैं बोल रहा हूँ भाई, बड़े भाई सचिन भाई की बात मानते हैं, कांड मराए सारे, ठीक है ना। इनसे कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं रखना हमको, ना इनको हमसे रखना है। बढ़िया बात है भाई, अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। देख लेंगे कौन नंबर 1 बनता है, कौन है या ना कौन नहीं है, ठीक है ना। चुप जाओ। क्या बताएं। बैडी तो हुई नहीं मैं जिस दिन रेड हेयर सैडी कसम से सैड रहती है पूरे टाइम। प्यास लगी ना वापस? क्या क्लास? प्यास लगी वापस। हाँ। यार कहाँ हो पानी? पानी नीचे आओ, पानी की बोतल लाओ। है नहीं इसमें। अब मेरे पैर में ना छाला हो रखा है। हाँ। टोपी मैन, यही थी टोपी मैन। 4 महीने से छाला ही हो रखा है मेरे पैर में। तो भाग के जमन करो। है नहीं इसमें। अब मेरे पैर में ना छाला हो रखा है। हाँ। बताओ। मेरा नाम चैट में तो आ ही रहा था। प्रांजल पवार है, पूर्ण विराम। बस और ये अपने लाल बाल रिग्रेट करती हैं बहुत ज्यादा। लाल बाल इतने रिग्रेट करती है कि क्या बताएं। बैडी तो हुई नहीं मैं जिस दिन रेड हेयर सैडी कसम से सैड रहती है पूरे टाइम। प्यास लगी ना वापस? क्या क्लास? प्यास लगी वापस। हाँ। यार कहाँ हो पानी? पानी नीचे आओ, पानी की बोतल लाओ। है नहीं इसमें। अब मेरे पैर में ना छाला हो रखा है। हाँ। टोपी मैन, यही थी टोपी मैन। 4 महीने से छाला ही हो रखा है मेरे पैर में। तो भाग के जमन करो। अभी तेरे को कोई भी नहीं पहचान रहा होगा यहाँ पे। छी किसे से ना, वही तो बेस्ट। मौखमपुर में मेरा डाउनफॉल हो गया है। भाई कौन है भाई? ये जान के बोलो भाई ना, मैंने लोग आए। क्या? ये देख लो देख लो देख लो। वो देखो जरा, उसको छत पे दिखाओ उसको। नहीं होता। सुनो, मेरे को एक बात कहनी थी भाई। जो भी अभी आया था नंबर 1 वाला भाई, तो क्या हो गया अगर मैं ऐसे? वो फेक था। फेक तो नहीं था, पर एक मिनट रुकना। कितना गजब है भाई। ये क्या है? फिर मैं आजा।
अरे मेरे भाई विवान नहीं करना ये सब चैट में। अरे मेरे भाई तुम डेंजर ही हो। अरे वाह सुपर चैट आया। डब्लू किट्टू डब्लू रुद्र। अबे वो पार्ट ओहो मेरी लिरिक्स पढ़ ली। अबे वो पार्ट ओहो मेरी लिरिक्स पढ़ ली। बढ़िया। क्या हुआ? एक सुपर चैट आया बढ़िया सा 4.99। अरे ऐसे ये था कि वो ब्रांड का वो लिख रहा है डॉलर वो वाला। विवान मेरे भाई आप डेंजर हो भाई आप। रुको थोड़ा। कौन है? पढ़े ना। क्या हुआ? सुपर चैट आया 4. यूरो पाउंड क्या होते? अबे ओ इसने गाली दी मैंने मैंने नहीं दी कोई गाली। इसने दी। पाउंड क्या होते? अबे ओ पाउंड ऐसा उन्होंने बोला। पाउंड है वो। यूरो क्या होते हैं? यूरो पाउंड क्या होते? अबे ओ इसने गाली दी मैंने नहीं दी कोई गाली। इसने दी चैट में। यूरो पाउंड एक ही तो होते हैं। हर्षिकेश भाई थैंक यू फॉर द 40 यार। पढ़ तो पढ़। क्या भाई एक काम करो मेरे घर आके रह लो तुम। किट्टू वो तो क्यूटी है वो ओवर एक्टिंग में भी क्यूट लगती है। देखा तू क्यूट बोल रहा है। क्यूट किट्टू एक लाइन बोल दो चुप रहेगी पूरे स्ट्रीम। फर्जी रुद्र बोल दूं? नहीं हाँ चुप बैठ तो। क्या खुद ही क्या बकचोदियां कर देते हो। अबे यार ये पता नहीं अब पता है चैट वो रीजन भी नहीं जो तुम सोच रहे हो। नहीं दिक्कत है क्या बताओ। 8 PM see you guys bye bye। Hold on. अरे आप कैसे आए इधर? क्या बात कर रहा है? आप हम तो देख रहे थे कितना अच्छा मैकबुक है आपका। वाह इसको तो बुलाया था मैंने। इसको इसलिए बुलाया था। ये कैसा है? इसने मेरे को बोला उनसे मिला दी इंस्टाग्राम पे फोटो डालने रीच आती है। मैंने बोला चल भाई आजा तेरी फोटो खिंचवा। मिलना है तो उनसे फुकरा इंसान से। आप उनके भाई हो ना? हाँ। आप भी यूट्यूब करते हो क्या? नहीं। वो लगता है आपको देख के वैसे। वो जो मैंने डोनाल्ड डक चुराई है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या चुराया? हाँ क्या मैंने बैग में थोड़ी कुछ चुराया। वो तो मैं लेके आया था अपना साथ। वो था ना एक डोनाल्ड डक चुराया। डोनाल्ड डक वापस कर। कौन सा वापस अरे भाई। ऐसी बात कर दी ऐसे। अरमान ओए मेरा बैग नहीं। ओए नहीं अरमान ये सब इसलिए लेके आया हूँ मैं तेरे लिए। मेरा वो ऑरेंज वाला बैग है। ये ग्रे वाला तेरा है। भाई मेरी दोस्ती खराब होती है ना। हम इतने अच्छे दोस्त हैं। इसलिए नहीं बुलाता इसको घर में। देख रहे हो मैंने थोड़ी यार ये पहने यार ये अरमान के है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इसको मैं ले यार तू रख ले। रख लूं? पूछ के ले लेता यार मैं वैसे ही दे देता। मतलब तुम कह ही रहे हो तो मैं रख ही लेता हूँ। मतलब तुम्हारा मन है क्या कुछ ऐसा?